Assalamualaikum everyone. Let's go to the public library situated in downtown Saskatoon. It's Sunday today and I decided to take my kids to the central library named Francis Morrison Library, which has 3 floors, mainly basement, ground floor and the second floor. It's such a huge library and this was Sunday, so it's all empty, like there were very few people. And as it's summer, so people prefer to go outdoors. But just look at this, how huge this library is. So this is basically the first floor, like the ground floor. And now I'm going to the basement and just going to check what's in there. Well, I can see there is a computer room which you can book if you have something to do on the computers. And then there is a theater, and there were actually 2 theaters, but well, there was not a lot of things of my interest, so I decided to go to the children's section क्योंकि मैं mainly अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आई थी. And see how beautifully they have decorated the interior of this library and made it interesting for the children. Well, इस डोर के दूसरी तरफ स्टोरी टेलिंग सेशन होते हैं and उनके different days हैं जो कि इनकी वेबसाइट पे पता चल जाते हैं. Today there was no storytelling session and they also have a huge collection of books for like all ages, and then different इन्होंने sitting stations बनाए हुए हैं, playing stations बनाए हुए हैं for children so that they stay occupied. इसके अलावा कंप्यूटर्स भी हैं, so you don't really need to book computer room. like अगर आपका कोई ऐसा काम है जो कि आप openly कर सकते हैं तो definitely you can utilize these rooms. I love these elevated sitting spots जो इन्होंने stair like बनाए हुए हैं with all those cushion seats for children to stay engaged with the books and have some nice time. इसके अलावा ये playing area उन्होंने बनाया हुआ है different sort of toys के साथ, learning toys के साथ, education equipment भी थी. मेरे बच्चों ने बहुत enjoy किया. They stayed engaged for like 2+ hours till the time it was library closing time, which was 5 o'clock on Sunday. Well, ये वाला room मेरा फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे दिस इज़ कॉल्ड लाइक इनोवेशन लैब, और यहाँ पे देर आर अ लॉट ऑफ सप्लाईज फॉर कटिंग, क्राफ्टिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, स्टैम्पिंग एंड व्हाट नॉट. You name it and they have it. And then once you are done after doing your art thing, you can definitely put it on that board. और मैंने भी अपने बच्चों के साथ ये देखे मैं डक बना रही हूँ by using those stencils. My children are also using stencils and we spent like 1 hour in this room literally. There was so many art and craft projects we did and we displayed on the board. मेरा बेटा भी लगा रहा है. दिस इज़ सच अ गुड थिंग जो कि यहाँ पे और पब्लिक लाइब्रेरीज़ भी हैं. हर पब्लिक लाइब्रेरी में ये वाला रूम नहीं होता है. सो डेफिनेटली इफ़ यू आर इनटू समथिंग लाइक दिस, तो दिस इज़ द प्लेस यू शुड विजिट. वेल, ये मेरे बड़े बेटे ने बनाया है एंड ही हैज़ पुट इट ऑन द बोर्ड. एंड डू यू सी दैट हैप्पी रमज़ान ड्राइंग दैट समबडी डिड. वेल, ये अंदर से लाइब्रेरी आपको नज़र आ रही है एंड ये बाहर से इनोवेशन लैब नज़र आ रहा है. दिस इज़ ह्यूज गाइस, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ कि ऑल द पब्लिक लाइब्रेरीज इन Saskatoon आर फ्री, एंड इवन इन ऑल ऑफ द Canada पब्लिक लाइब्रेरीज आर फ्री, एंड they are such a good resources for yourself and your children, like free resources. You don't really need to buy a lot of things for your projects and your assignments. You can find all those free in these libraries. Like every month हम लोगों के 2 से 3 visits public libraries में होते हैं, and on every visit my children get like 20 to 30 books from the library. और फिर हम लोग 2 weeks तक visit नहीं करते हैं because we have other activities to do. So it's a good thing. And ये वाला एरिया मेरा फेवरेट है because I have seen babies to toddlers to the kids who are of my kids ages जो यहाँ पे बैठ के काफ़ी देर engaged रहे, play करते रहे.
और प्ले के साथ साथ लर्निंग भी है. सो आई लव दिस लर्न एंड प्ले कॉन्सेप्ट एनीवेज. बहुत सारे टॉयज़ भी हैं, बहुत सारे लर्निंग एजुकेशनल टूल्स भी हैं, टॉयज़ भी हैं. एंड जस्ट लुक आउटसाइड, इट्स सो ब्यूटीफुल, सनी, क्लियर, एंड definitely it's so good to see roads clear of the snow or shiny and bright Saskatoon all the way. आजकल तो समर्स हैं और इनफैक्ट नॉट समर्स बट स्प्रिंग है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल आउटडोर्स एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू डू आउटडोर्स एज वेल. बट इस तरह की फैसिलिटी, ऑल दिस पब्लिक लाइब्रेरीज आर सीरियसली अ ह्यूज ब्लेसिंग इन द वंस ऑफ विंटर्स, जब बाहर आपके नीज तक स्नो पड़ी होती है एंड यू हैव लाइक नो वेयर टू गो. लिटरली these public libraries and indoor facilities are a huge blessing. So yes, my children were also very excited spending their time. Now this 7 years old boy has turned back into a baby and he's literally playing with the baby toys. But yeah, they're free to do anything. It's their free time anyways. But just look at this huge collection of books, guys. There are fiction, non-fiction, and the learn and play books, the voiceover books. Let's walk to this section which has picture books. And seriously guys, it has such a huge collection. यहाँ पे picture books हैं. Then that is chapter books and novels for a little bit older children. My favorite section is this multilingual juvenile section जिसमें कि हर language की book आपको available होती है. So I will always keep a stop here and get some books from Urdu section because I really want my kids to stay in touch with their national language. I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. Please like and subscribe to my channel. Till then, Allah Hafiz.